Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah who is beneficent and the merciful God. Dear students, today I'm going to share really helpful things about accent. That what is accent? Accent क्या होता है? Accent का मतलब होता है लहजा. For example, हम यहाँ पे सब उर्दू बोलते हैं. We all speak उर्दू है. लेकिन जो हमारा बोलने का स्टाइल है, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें कराची वाले लोगों के साथ, तो हमारा उर्दू बोलने का एक्सेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है. सिंध वाले लोगों के साथ that would be far different. हर एक जगह का एक मुकामी एक्सेंट होता है, बोलने का एक लहजा होता है, लबो लहजा जिसे आप बोलते हैं. तो लबो लहजे को हम बोलते हैं एक्सेंट. एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द इंग्लिश एक्सेंट विद यू कि वो लफ्ज़ों को जो है मिलकर किस तरीके से वो खूबसूरती से अदा करते हैं, यानी किस तरीके से पढ़ा जाता है, बोला जाता है. सो इफ वी लुक एट द फर्स्ट वन सेंटेंस हियर, व्हाट इज योर नेम? Well, my dear, let me tell you what is your को जो English लोग हैं, the English people, they pronounce it Voucher. They simply pronounce it Voucher, V-O-U-C-H-E-R, Voucher. What's your name? What's your qualification? And when they speak in that way, तो हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या लफ्ज़ बोल दिए हैं इन्होंने. तो they use very simple words, as I said before in so many of my videos, previous videos, but they just focus on their accent, जो कि एक लहजा develop हो जाता है इंसान का. And the next is, I'm going to attend a party. I'm going to attend the party. Well, my dear, going to, it's spoken together, gonna. और बड़ा खूबसूरत लगता है कि आप गौना, क्योंकि ये हम लगा के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये काम करने लगा हूँ, मैं वो काम करने लगा हूँ. I'm gonna go to market, I'm gonna drink the beverage, I'm gonna eat biryani. तो गौना आप यूज़ करके बल्कि बहुत से sentences भी बना सकते हैं. And you can impress the people. आप अपने surrounding में लोगों को, दोस्तों को impress भी कर सकते हैं. The next word is he used to fight with others. Used to. Well, over here, used to, it is spoken together, Yoosta. इसे हम Yoosta पढ़ते हैं जब हम इसको pronounce करते हैं. अंग्रेज लोग जब बोलते हैं तो वो तो फ्लुएंसी में बोलते हैं, रवानी में बोलते हैं, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना. So there are a lot more words, लेकिन अभी जो है at the moment I'm just going to teach you these 5 different words of accent. So used to का मतलब है किया करता था, और आदत है. यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है वो मैंने पास्ट के सेंस के लिए किया है कि किया करता था. और अगर मैं कहता आदत है तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट के फौरन बाद मुझे इज एम आर यूज़ करना था, और यहाँ पे फाइट की जगह फाइटिंग का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता. अगर मैं कहता जी उससे झगड़ा करने की आदत है, ही इज़ यूज्ड टू फाइटिंग विद अदर्स, लेकिन यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है ही यूज्ड टू फाइट विद अदर्स कि वो लोगों से झगड़ा किया करता था. तो किया करता था के लिए मैंने यूज्ड टू का वर्ड इस्तेमाल किया है. And the next word is we want to go for shopping. Well, everybody likes shopping. If you talk about women, men, child, students, like everybody likes to go for shopping. But here मैंने इसलिए सबके लिए collectively word use कर लिया है. We want to go for shopping. Want to. Well, my dear, want to accent is wanna. इसे हम wanna पढ़ते हैं. तो एक खूबसूरत सा वर्ड है, खूबसूरत से स्टाइल में आप बोल सकते हैं we wanna go for shopping, we wanna eat Chinese today, we wanna go there, we wanna do this. तो जो आप करना चाहते हैं, wanna चाहता है के वर्ड है जिसको want to और फिर wanna एक्सेंट में चेंज कर देते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन वर्ड will you listen to me? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? It's a future indefinite tense, but will you जो है, will you, it is spoken together, Willya. Will you listen to me? क्या मेरी बात सुनेंगे? Will you come here? क्या आप इधर आएंगे? Will you pass me the salt, please? क्या आप मुझे नमक पकड़ा देंगे? So आज जो हमने डिस्कस किया है, it's about what is your, it is accent is Voucher, going to accent is gonna, used to accent is Yoosta, want to accent is wanna, and will you accent is Willya. So I hope you will learn it and you will practice it. Keep smiling. Have a nice day. Allah Hafiz.